This is Pranav, second year MBBS, IGMS Patna, Bihar. Welcomes you all. So, hello juniors, welcome to our channel PK Transcoast Medicos. Here, I am going to describe you all the bones for your first year MBBS examination. Now, starting with this clavicle bone. तो ये क्या है? एक नॉर्मल क्लास 12 के लिए ये तो एक सिंपल कॉलर बोन है, बट नाउ इन मेडिकल टर्म दिस इज द clavicle bone, both the left and right side. Now for the basic introduction, this is a clavicle and it supports your shoulder and also helps in the transmission of weight from the upper limb to the axial skeleton. Okay. The most important thing is that कोई भी bone मिले तो you have to determine the side to which it belongs. Now what about this clavicle? Now you have to hold it in your hand to which it belongs. अगर ये लेफ्ट साइड की है तो आपको लेफ्ट हैंड में इस तरह होल्ड करना है. अगर मान लो ये राइट, सपोज करो ये अगर राइट साइड की होती तो आपको राइट साइड में इस तरह होल्ड करना है. ठीक है. नाउ सी द हाउ यू विल डिटरमाइन इट्स साइड. So for side determination, see, the lateral end is flat. This is a lateral end. It should be flat from above downward, and the medial end is large. It should be large as compared to lateral end, and it is large and quadrilateral. See, it is quadrilateral and it is flat from above downward, and the shaft is slightly curved. This is shaft and slightly curved such that the medial 2/3 part and lateral 1/3. The medial 2/3 part is convex forward and lateral 1/3 part is concave forward, and the inferior surface is grooved longitudinally. This is the inferior surface and this is the grooved longitudinally which is the subclavian groove for the subclavius muscle. These 3 points should be at your tip of tongue. Now what about its peculiarities? See, among all the bones of your upper limb के सारे bones को मिला भी ले, ऐसे humerus हो गए, radius, ulna, and still this clavicle is quite unique among all the bones. And what are those points? That this is the only long bone that lies horizontally. It is subcutaneous, मतलब that lies just below the skin, and it is the first bone to start ossifying. And one more point that is even asked in your MCQ, that you will be asked that mention one bone which has two primary centers of ossification and has no medullary cavity. The answer will be the only this clavicle bone. Okay. Now bone को describe करने के लिए you have to consider this bone that is divided into 3 parts, that is the lateral end, medial end, and the shaft. The shaft is further divided into 2 parts, that is the lateral 1/3 part and the medial 2/3 part. Now for lateral 1/3 part you have two border, that is the anterior border, posterior border, superior surface and the inferior surface. And for the medial 2/3 part, and it is rounded as compared to the lateral one, it is rounded and is said to have 4 surface, that is the anterior surface, posterior surface, superior surface and the inferior surface. Remind it that it has no border. The medial 2/3 part has no border, but the lateral 1/3 part has 2 border and 2 surfaces. For this medial 2/3 part, anterior surface is convex forward, so it is convex. The posterior surface is smooth, superior surface is rough. This part of this bone is rough, and it will give the attachment to the muscle sternocleidomastoid muscle. It has 2 heads, the sternal head and the clavicular head, which I will be describing you later on. So superior surface and inferior surface BS and rough oval impression. यहाँ थोड़ा damage है. This is a rough oval impression, and the lateral half of this inferior surface BS a groove, that is the subclavian groove for the subclavius muscle. Okay. For this medial 2/3 part, anterior surface is convex forward, so it is convex. The posterior surface is smooth, superior surface is rough. This part of this bone is rough, and it will give the attachment to the muscle sternocleidomastoid muscle. It has 2 heads, the sternal head and the clavicular head, which I will be describing you later on. So superior surface and inferior surface BS and rough oval impression. यहाँ थोड़ा damage है. This is a rough oval impression, and the lateral half of this inferior surface BS a groove, that is the subclavian groove for the subclavius muscle. Okay. Now for the lateral end and the medial end, as I told you earlier, lateral end is quite flat from above downward, and it bears a facet for its attachment with the acromion process of the scapula. Just wait, the scapula. This is the scapula of right side. Okay, I will make a separate video on this bone. So the acromion process, coracoid process, acromion process. So it will make an attachment like this to form a joint, that is the acromio
clavicular joint, acromioclavicular joint. Now the medial end or the sternal end is quadrangular, and it will make with attachment with the clavicular notch of the manubrium sterni to form the sternoclavicular joint. Two joint is the sternoclavicular joint with the sternum, and is the acromioclavicular joint with the acromion process of the scapula. Okay, now let's see the muscles attachment. Now the attachment part, the lateral end, the margin of the articular surface, actually it forms the acromioclavicular joint. So the margin of the articular surface will gives attachment to the joint capsule, and the medial end, the margin of the articular surface gives attachment to the fibrous capsule all around, articular disc posterior superiorly, and the interclavicular ligament. It is the one more clavicle here, so it forms the interclavicular ligament superiorly. Now for the lateral 1/3 part, the anterior border gives origin to deltoid, deltoid का origin यहाँ से. The posterior border gives insertion to the trapezius muscle, the conoid tubercle this part, and trapezoid ridge. Conoid tubercle trapezoid ridge gives attachment to the conoid and trapezoid part of the coracoclavicular ligament. As the name suggests you, this coracoclavicular ligament connects the coracoid process of the scapula and the clavicle. Now for the medial 2/3 part of the shaft, the most of the anterior surface gives origin to the pectoralis major. Rough superior surface, as I told you at the beginning of the video, that is, it gives origin to the clavicular head of the sternocleidomastoid muscle. There are two heads, the clavicular head and the sternal head. Now the oval impression, that is this one on the inferior aspect, gives attachment to the costoclavicular ligament, and the inferior aspect only there is a groove, as I told you, that is a subclavian groove for the insertion of the subclavius muscle. And there is a fascia important for you, and it will be asked in your examination. It is a clavipectoral fascia. इसे बार बार पूछा जाता है कि कौन सा स्ट्रक्चर इसको पियर्स करते हैं. So I will make a separate video on that fascia. Now just remember that now that the clavipectoral fascia is attached to this margin of the groove. Okay, and one more muscle is there, that is the sternohyoid muscle. This takes its origin from the medial end of the posterior surface. Okay, so summarizing all together what you have learned in this video, I have made a separate notes for you. Okay, which will be very useful for your university examination, क्योंकि एग्जामिनेशन से हमें काफ़ी सारे बोन्स का रिविजन करना होता है, and it will be very difficult for you all to revise all those bones from your textbook. I have made it short and crisp for you. Okay, you may download these notes from the link provided in the description box of this video, but use the password for this PDF file Dr. Pranav in small letters only. तो इसमें साइड डिटर्मिनेशन में 4 पॉइंट्स है. लैटरल एंड जो कि फ्लैट होता है, मीडियल एंड लार्ज एंड क्वाड्रिलैटरल है, साफ्ट जो कि थोड़ा कर्व्ड रहता है, मीडियल 2/3 जिसमें कन्वेक्स है, लैटरल 1/3 कंकेव है, सबक्लेवियन ग्रूव है जो कि इन्फीरियरली प्रेजेंट रहता है. तो इस 4 पॉइंट को इसलिए आप याद कर सकते हैं इस नोट से. इसके पिक्यूलरिटीज़ में एक पहला हो गया कि एक वन ऑफ द लॉन्गेस्ट हॉरिजॉन्टल बोन है, सबक्यूटेनियस होता है, मेम्ब्रेन ऑसिफिकेशन, 2 प्राइमरी सेंटर्स है, और उसमें कोई भी मेडुलरी कैविटी नहीं होता है. फीचर्स जो कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है, साफ्ट, लैटरल एंड मीडियल एंड. उसमें साफ्ट लैटरल 1/3 जो कि फ्लैटेंड है, 2 बॉर्डर, 2 सर्फेसेस, एंटीरियर पोस्टीरियर सुपीरियर इन्फीरियर. मीडियल 2/3 जो कि राउंडेड रहता है, उसके 4 सर्फेसेस, एंटीरियर पोस्टीरियर सुपीरियर इन्फीरियर. और उसके जो एंड्स है, लैटरल एंड जो एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट फॉर्म करता है, मीडियल एंड स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट फॉर्म करता है. अटैचमेंट, इसको तो मैंने अच्छे से वीडियो में बता रखा है. ओके, लैटरल एंड में मेरा आर्टिकुलर सरफेस जॉइंट कैप्सूल फॉर्म करता है, मीडियल एंड फाइब्रस कैप्सूल, आर्टिकुलर डिस्क, इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट जो कि सुपीरियरली होता है. लैटरल 1/3 ऑफ शाफ्ट में एंटीरियर बॉर्डर, डेल्टॉइड का ओरिजिन, पोस्टीरियर बॉर्डर में ट्रेपेजियस का इंसर्शन, कोनाइड ट्यूबरकल और ट्रेपेजॉइड रीज जो मेरा कोनाइड एंड ट्रेपेजॉइड पार्ट और कोराकोक्लेविकुलर लिगामेंट का अटैचमेंट होता है वहाँ पे. मीडियल 2/3 शाफ्ट जो है एंटीरियर सरफेस मेरा पेक्टोरलिस मेजर का ओरिजिन है. सुपीरियर सरफेस का मीडियल एंड जो है वो क्लेविकुलर हेड ऑफ स्टर्नोक्लेविडोमास्टॉइड है. ओवल इंप्रेशन इंफीरियरली कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट का अटैचमेंट है. सबक्लेवियन ग्रुप में सबक्लेवियस का इंसर्शन है, और पोस्टीरियर सरफेस मीडियली में स्टर्नोहायोइड का ओरिजिन है. नाउ द बिगेस्ट सरप्राइज फॉर यू ऑल, मैंने एक कोड दे रखा है प्रिपलैडर सब्सक्रिप्शन के लिए, एंड इस कोड के थ्रू आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में काफ़ी सारे बच्चे सब्सक्रिप्शन ले ही लेते हैं. एंड आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज़ मस्ट, बट टू कंटिन्यू फ्रॉम द बुक इट विल बी अ लिटिल बिट टफ फॉर यू ऑल.
मैंने खुद भी प्रोप्राइटर से ही पढ़ा और काफ़ी अच्छा कंसेप्ट बिल्डअप हो जाता है. सो आई लिटरली प्रेफर यू ऑल गाइज टू चेक फॉर डिस्काउंट यू आर गेटिंग थ्रू दिस कोड और नॉट. ओके, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैंने एक प्रोप्राइटर वाले सर का नंबर दे रखा है, यू मे इजली कॉन्टैक्टेड फ्रॉम देयर. मीनवाइल अगर आपको कोई डाउट हो या कोई कन्फ्यूज़न हो, यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स. आई विल बी सून अपलोडिंग द वीडियो फॉर द नेक्स्ट बोन. तब तक आप लोग कमेंट कीजिए किस बोन का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को चाहिए. ओके, थैंक यू.